5% नायासिनमाइड या 5% नायासिनमाइड इनफ है, आपको 10-12% नायासिनमाइड की बिल्कुल जरूरत नहीं। किसने बोला? एक डॉक्टर ने, एक बहुत फेमस, बहुत रेप्यूटेबल और बहुत ब्यूटीफुल डॉक्टर ने ये एक स्टेटमेंट बोली और बाकी सारी डर्मा कम्युनिटी तोते के जैसे रिपीट करने लग गई। क्योंकि जब कोई फेमस टैलेंटेड इंसान ऐसी स्टेटमेंट बोल रहा है तो हम अपना दिमाग क्यों लगाएं? वेल, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट ट्रू एंड टुडे वी आर गोना डेल्व इनटू इट। नायासिनमाइड 5%, 2%, 10%, 15% और 20% किसके लिए और किन स्किन कंसर्न्स के लिए हैं ये सारे नायासिनमाइड सेरम्स, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। और ये 5% वाली कंट्रोवर्सी कहाँ शुरू हुई इसे भी बताऊंगी, इसका भी पूरा रिसर्च मैं आपको बताऊंगी। हेलो हेलो एंड वेलकम टू स्किन केयर सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है निपुण, आपकी स्किन केयर बेस्टी एंड अ सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट। टुडे वी आर diving deep in the niacinamide world. Niacinamide, the one beautiful ingredient जो pretty much हर स्किन केयर प्रोडक्ट के अंदर है और अब बहुत जल्द कॉर्नफ्लेक्स में भी मिलेगा, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। डिफरेंट स्किन टाइप्स, डिफरेंट स्किन इश्यूज, लेयरिंग कॉम्बिनेशंस, कैसे नायासिनमाइड फिट होता है आपके लाइफ में, इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। वीडियो शुरू करने से पहले यू नो द ड्रिल, लाइक सब्सक्राइब अगर आप एंजॉय करते हैं साइंस पैक्ड स्किन केयर कंटेंट, एंड इफ यू वांट मी टू रिव्यू योर रूटीन्स, यू वांट टू टॉक टू मी इन अ क्लोज कम्युनिटी, चैनल मेंबरशिप्स आर ओपन। ज्वाइन बटन इज नेक्स्ट टू द सब्सक्राइब बटन, जो बहुत टाइम लोगों को दिखता नहीं है, बट इट्स अ यूट्यूब ग्लिच गाइस, मैं कुछ नहीं कर सकती। अब डायरेक्टली करते हैं वीडियो को शुरू और कंट्रोवर्सी को करते हैं खत्म। 5% नायासिनमाइड इनफ है, सबसे पहले किसने कहा था? बैक इन 2021, Shireen Idris, Dr. Shireen Idris, the beautiful, the talented, very famous pillow talk derm on YouTube, on Instagram, on TikTok, उन्होंने कहा था 5% is enough। और ये and because I've been following her for a while, okay, ये उन्होंने बोलना शुरू किया था a few months before she launched her skincare line। उनके skincare line में एक बहुत amazing illuminating serum है, जिसमें है अल्फा आर्बुटिन, नायासिनमाइड, ग्लिसरीन एंड कोजिक एसिड, और इसमें है 5% niacinamide. Now understand the time at which this product was being launched was still the time when everybody was really obsessed with the ordinary and other niacinamides and everything was 10%. So उन्होंने आके बोल दिया कि देखो 5% इनफ होता है, उससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। 5% इनफ होता है जब आप उसे कंबाइन कर रहे हैं एक हाइब्रिड सेरम में जिसमें और एक्टिव्स हैं, alpha arbutin, kojic acid. That is when you will use a 5% niacinamide in your formulation. Otherwise आपके बाकी ingredients stabilize नहीं करेंगे, और अगर stabilize कर भी गए तो स्किन केयर के नाम पे reaction होगा लोगों के चेहरे पे। And so as a precursor और as talking about her line, उन्होंने ये बात की थी back in 2021, even before her skincare line was launched। फिर सब बोलने लग गए, you know, 5% is enough, 5% is enough, 5% is enough. No, it's not enough, because there are literally 10% people in the world जो 5% niacinamide के साथ real skincare benefit देख सकते हैं, और वो 10% लोग हैं जिनके चेहरे पे very large open pores नहीं है, जिनकी चेहरा बहुत ज़्यादा sensitive है, जो कुछ tolerate नहीं कर सकते। Those are the people who can use 5%. If you see any of my videos, मैं हमेशा कहती हूँ that if your skin is dry or sensitive, start with the 5% niacinamide and start building your skin's tolerance to 10%. When you have real skincare concerns like we all do, you need 10%. So I hope जिन को questions थे कि why do I still recommend 10% or 15 or 12, मैंने तो बहुत सारे concentrations try करे हैं up to 20%. Why don't I just stick to 5%? Because 5% is for 10% of the population. All of us who have real skin concerns need a higher concentration. And I hope you've understood this entire logic. Shireen Idris का कोई भी product अभी तक मैंने try नहीं किया है because they don't ship to the UAE. And when I was in the US, मैं भूल गई ऑर्डर करना. I should have ordered it. Huge respect for her. Love the way she introduced her brand. I believe it's doing really well. But I just wanted to clarify कि ये 5% आया कहाँ से. अब जाते हैं वीडियो के मेन पार्ट में. What are my most recommended niacinamide serums and for who? अगर हम बात करें बिल्कुल सेंसिटिव स्किन वालों की, लाइक रोजेशिया प्रोन स्किन, सुपर सेंसिटिव स्किन, ड्राई सेंसिटिव स्किन, जिनको लगाते ही कुछ रैशेस टाइप के हो जाते हैं, तो बॉस 5% इज ऑल्सो टू मच फॉर देम। सो इफ यू वांट टू यूज नायासिनमाइड और यू वांट द बेनिफिट ऑफ नायासिनमाइड, यू विल यूज द ऑर्डिनरी बैरियर रिपेयर सेरम, क्योंकि इसमें नायासिनमाइड है,
ingredient number 2 or 3 and it is in low concentration. इसमें niacinamide की concentration 2% से कम है. So you can literally use the niacinamide, the ordinary barrier repair serum, the beautiful pink serum जिसमें niacinamide आपको मिलेगा लेकिन कम concentration में. अगर आपकी स्किन ड्राई सेंसिटिव है पर बहुत ज़्यादा ड्राई है और यू लिव इन अ प्लेस जहाँ विंटर्स बहुत हार्श हैं एंड यू स्टिल वांट द बेनिफिट ऑफ niacinamide बट 5% ट्राई करने में डर रहे हो, यू कैन एक्चुअली ट्राई द नम्बुजिन कोलाजन पुडिंग. इसमें पेप्टाइड्स हैं जिनकी कॉन्सेंट्रेशन, आई विल forewarn you, is less. They are way down on the ingredient list, but it is a hydrating creamy serum. It's almost like a light moisturizer and that has niacinamide again in less than 2% concentration. So ये एक और form है in which you can try niacinamide. So ये है मेरे 2 recommendations अगर आप niacinamide को try करना चाहते हैं ना, very gentle, very simple way जिससे zero irritation होगी, ये हैं 2 serums. और the ordinary barrier repair serum, or you can use the Nambuzin collagen pudding. Now let's come to number 3, which is the 5% minimalist niacinamide serum. Now the reason I love it is because in addition to niacinamide, they also have given you bifida ferment that has skin building properties, and that is a great one for me because I always recommend, and oftentimes जब भी मेरी skin layering allow करती है, which is when the weather is really dry and cold, I like to use a bifida ferment serum. Innisfree वाला, Benton वाला, बहुत सारे brands में आता है. You don't need to use the advanced night repair by Estee Lauder, but you get bifida in a lot of other serums, and they have literally added that to a niacinamide, and that is what makes the minimalist 5% niacinamide serum so beautiful, so elegant, just like a wow. I'm obsessed with that woman. I've literally followed her account. मैं रात को बैठ के ना उनके सारे ऐसे लड्डू पीला, माउस पिंक सब देखती हूँ. कुछ नहीं खरीदती हूँ, सब देखती हूँ. I love her. So the niacinamide is beautiful. 5% concentration में आपको niacinamide serum plum में भी मिलता है. And now this is also an interesting formula because they have added rice extract to it. Rice is hydrating, niacinamide is brightening. Overall, this is a brightening serum. And this is something I also recommend. But अगर मैं general feedback की बात करूँ that I have received from clients and the community, I see people loving the minimalist niacinamide 5 a lot more than the plum one. The plum one is not bad. In fact, they have a niacinamide toner which has 3% niacinamide, which is also a great way to get started with a high concentration of niacinamide अगर आपकी skin sensitive है. So you can use the niacinamide toner, you can use the ordinary barrier repair serum, you can use Nambuzin. या मेरा favorite for sensitive skin is the 5% minimalist niacinamide serum, which also has bifida ferment. अब बात करते हैं 10% niacinamide serums की. And in 10% niacinamide serums, you all have seen the ordinary. You've seen me using the ordinary, you've seen other people using the ordinary. I don't recommend the ordinary. मुझे मेरे स्किन की जो टॉलरेंस लेवल है उस पर ऑर्डिनरी अब सूट करता है. But when I started using ordinary back in 2019, 2018, I think it was 2018, it broke me out and मुझे लगा कि I'm the problem because this is such a great brand, everybody loves it, I'm the problem. But I was not the problem and you're not the problem. It is this unique formulation by the ordinary that is the problem. 99% लोगों को ordinary का niacinamide serum सूट नहीं करता, इसलिए I don't recommend it. But if you're using it and it suits you and आपको कोई breakouts नहीं हो रहे, irritation नहीं हो रही, then go ahead and keep using it. But अगर ordinary के niacinamide use करने के बाद आपको लगा कि आपको niacinamide से allergy है, then my friends, you're not allergic to niacinamide. It was just this formula. Go ahead and try your skin. Try using a different formula that is going to be better for your skin. Speaking of niacinamide serums in 10% concentration, I have 2 more options and both these options are a little more pricey. ये affordable नहीं हैं. Number 1 is the one by Sunday Riley. I was using it in the early part of this year through the summer. You've seen me use it. You've seen me love it. I think this is niacinamide with more anti-aging benefits because this also has resveratrol and this is a really nice formula. Water-based formula है. 10% niacinamide, great if you want to add it up to your anti-aging routine or you just want कि आपका retinol आप use कर रहे हो उसके साथ niacinamide use कर रहे हो but you want a better anti-aging niacinamide. This one by Sunday Riley, the Be Nice one, is just for you. And if you've been following me for a while, you know my absolute favorite niacinamide serum. That is by the brand La Roche-Posay. This is a niacinamide that has my heart. I'm on my bottle number 4.
I don't know how much I use it. I think I just find it so brightening. I put it on my neck, behind my neck. अगर ये इतना महंगा नहीं होता, I would literally put it on my body. I absolutely love it. But the only downside is कि ये product उनके लिए नहीं है जिनकी skin oily है. This is highly recommended if you have normal to dry or extremely dry skin. If you have oily skin, don't use it. Definitely not in the summer because this formula is a little thick and hence it is not for oily skin. But it is one of my most favorite niacinamide serums on the market. This is by the brand Inkilist. This is by the brand La Roche-Posay. The La Roche-Posay Niacinamide 10. अब देखो ये जो 10% तक का niacinamide serum है is going to work in terms of boosting your skin's efficiency and boosting the efficiency of your products. अगर आप यूज कर रहे हैं कोई भी brightening serums from a melasma hyperpigmentation routine जैसे कि अल्फा आर्बुटीन नायासिनामाइड, एज़लिक एसिड नायासिनामाइड, इस तरह की कोई चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, इट्स आइडियल. अगर आपकी स्किन एक्सेसिवली ऑयली है, आप नायासिनामाइड यूज़ कर रहे हैं फॉर ऑयल कंट्रोल, नायासिनामाइड 10% इज़ फॉर यू. अगर आप नायासिनामाइड को लेयर कर रहे हैं विद सैलिसिलिक एसिड, इट इज़ गोइंग टू हेल्प योर लार्ज ओपन पोर्स. तो 10% niacinamide के साथ literally 50-60% of the population can be totally fine. But let's actually not 50-60%, let's say even up to 80% of the population will be fine with 10% niacinamide. But there are people who need a little more because उनकी skin पे होता है कुछ इस तरह का texture, extreme bumpy texture, extreme comedones, extreme large open pores. तो आप क्या करोगे? तो आप यूज करेंगे 12% niacinamide serum. You have two options, एक Indian brand है, एक global brand है. Global brand में है Naturium 12% niacinamide serum, gorgeous. And in Indian brand, you have the Wishcare niacinamide serum, जिसमें rice extracts, rice and oat extracts हैं, if I'm not wrong. Both of them are lovely. However, ये जो 12% niacinamide serum है, इसे आप रोजाना यूज नहीं कर सकते बिकॉज आपके पोर्स कितने भी लार्ज हो, आपकी स्किन कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो, आपको थोड़े टाइम के बाद ड्राइनेस, इरिटेशन, पीलिंग होगी. सो व्हेन यू आर यूजिंग अ niacinamide serum like this, you will use it 3 to 4 times a week मैक्सिमम, और ट्राई करें कि इसके साथ और कोई एक्सफोलिएटिंग सेरम आप लेयर ना करें. सो इफ यू आर यूजिंग अ 12% niacinamide serum, डोंट यूज अ सैलिसिलिक एसिड विद इट, डोंट यूज अ रेटिनॉल विद इट. ज़्यादा हो जाएगा, your skin will get irritated. You are using a high concentration of niacinamide as a treatment, so use it alone and no more than 3 to 4 times a week, and that is only if you have extreme texture, extreme bumpiness, extreme large open pores. और अब बात करते हैं सबसे खतरनाक, द 20% niacinamide serum जो मैंने ट्राई किया, स्किन को डिस्ट्रॉय किया कुछ 3 बार, एंड दैट इज बाय द ब्रांड Inkilist. दिस इज द Inkilist super molecules or some range like that, जिसमें आपको मिलता है 20% niacinamide. Now understand, you also get 20% niacinamide in the brand Paula's Choice, but for me here in the UAE it was really expensive. That was like almost 200 dirhams and this was like 70 dirhams, so I obviously got the Inkilist one. This is a spice bomb. आप इसे यूज करेंगे हफ्ते में 1 मैक्सिमम 2 बार, गैप लेंगे, और उसके पहले ना आप रेटिनॉल यूज कर सकते हैं, ना कोई एक्सफोलिएशन यूज कर सकते हैं. यू बेसिकली हैव, जब आप niacinamide 20% यूज कर रहे हैं, अंडरस्टैंड यू आर यूजिंग इट टू सॉल्व सम बिग एस स्किन कंसर्न. बिग एस स्किन कंसर्न, आपका स्किन 2 मिनट में बहुत सारा ऑयली हो जाता है. बिग एस स्किन कंसर्न. नंबर 2, आपके बहुत ज़्यादा लार्ज ओपन पोर्स हैं, बहुत ज़्यादा टेक्सचर है जो ठीक ही नहीं हो रहा. You've tried 10%, you've tried 12%, nothing is working. Now you are at 10%, 20%. अब आप सिर्फ niacinamide यूज करेंगे हफ्ते में 2 बार, आगे पीछे आप और कोई चीज़ यूज नहीं करेंगे बिकॉज 200% you will get irritation. If you have extreme texture, extreme bumpiness and you're using 20% niacinamide, understand कि ये आपकी प्राइमरी ट्रीटमेंट होती है. इसके साथ अभी आप बाकी चीज़ें यूज नहीं कर सकते. And if you want to know how do you use niacinamide 20%, क्या था मेरा एक्सपीरियंस, that's the next video. Go check it out. I will see you tomorrow and I hope आपके सारे questions 2% से लेके 20% of niacinamide have been cleared via this video. Video pasand aayi, don't forget to like and subscribe. I will see you tomorrow. Till then, take great care of yourself. Bye.